हेलो एवरीवन, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। कल अच्छे से नींद खींच ली होगी क्योंकि आज हमारा मैराथन स्टार्ट करना है। यस, okay, so just a small recapitulation. In the previous class, basically कल वाले सेशन में, that was the first day of the marathon revision. कल हम लोग ने complete किया था. Can't hear. Hello, hello, hello. Hello, hello. Okay. I guess the problem is from your side. Please try refreshing the system. Yes. Okay. So in the previous very class आवाज आ रही है, ठीक है? In the previous very class हम लोग ने कल वाले क्लास में एकदम ही क्विक रिकैप्चुलेशन किया था कंपनी ऑडिट, कारो एंड ऑडिट रिपोर्ट एज अ स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे 700 की सीरीज हम लोग ने वहां पे खत्म कर ली थी। आज अभी लाइक 8 to 10, 10 to 12 आज के तारीख में अभी के स्लॉट में हमको कवर अप करने हैं स्टैंडर्ड्स, ठीक है? ये स्टैंडर्ड्स में बेसिकली माय फोकस विल बी ऑन द इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स प्रायोरिटी एंड देन द रिमेनिंग वंस, ठीक है? सो चलिए शुरू करें। आई होप आज मॉर्निंग वाले स्लॉट में 7 to 8 के स्लॉट में आपने लाइबिलिटीज एज वेल एज ऑडिट ऑफ सीएफएस कंप्लीट किया होगा। यस, सो this is how the plan looks like. I hope you are following this plan. Anyone still remaining? Anyone starting the date now? Yes. Liabilities of auditor isn't complete yet. Okay. CFS done. Okay. Done. From where you can see CFS and liabilities of auditor done both. If at all done both, very good. If at all done one, please try to complete the remaining chapter in the lunch wala break. The lunch wala break is of 45 minutes for you all. ठीक है? तो अभी 45 मिनट्स की कोई जरूरत नहीं, 5 मिनट में खाना खा लो, 40 मिनट्स गिव टू योर चैप्टर विच इज रिमेनिंग। इफ एट ऑल बाय एनी चांस किसी स्टूडेंट का रह चुका है तो, ठीक है? Yes, you can get the CFS and liabilities of auditor from my YouTube channel. वहाँ पे चैनल पे जाकर के आप इसको देख सकते हो। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, 2 की स्पीड पे भगा करके देख लेना, ठीक है? चलिए नाउ लेट्स बिगिन। बोलो श्री अम्बे मात की जय। सारंग गुड, वेरी नाइस। चलो ठीक है। Yeah, engagement and quality, and again just a kind of disclaimer. If at all you have any kind of questions in between, try not to break the rhythm. Wait for the last of the session. In that point of time, we'll try accumulating all your doubts and you ask me then. Point number one. Point number two, if at all you miss on any point, say for example I'm teaching you and I am just recapitulating anything and you miss any point, try not letting me repeat it, because यहाँ पे इतने सारे जन दिख रहे हैं. Only for a student, repetition will create like involvement of time for all. तो ट्राई करना ऐसा ना हो, आप जा करके थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है? दिस इज द प्लस ऑफ द सिस्टम वेर यू हैव द टीचर रिकॉर्डेड, ठीक है? ओके, चलो ऑल सेट। आई होप आज आपने अच्छे से नींद भी की होगी, बिकॉज द प्रीवियस नाइट आराम से नींद कर लेना है, आज आपको स्ट्रेच करना पड़ सकता है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। Now, engagement and quality control standards. Engagement and quality control standards में engagement standards का मतलब क्या होता है? The very assignments you are engaged for. इसमें क्या क्या चीजें होती है engagement and quality control standards में?
क्या क्या चीजें होती है? एक होता है अश्योरेंस एंगेजमेंट और दूसरा होता है अग्रीड अपॉन सर्विसेज। अश्योरेंस एंगेजमेंट में यू कैन एक्सप्रेस अश्योरेंस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें 3 लेवल ऑफ अश्योरेंस होते हैं। 1 एब्सोल्यूट अश्योरेंस, 2 रीजनेबल अश्योरेंस, 3 लिमिटेड अश्योरेंस। Absolute assurance is where you express 100% of opinion. For expressing 100% of opinion, investigation is required to be conducted. And for investigation, you don't have any standardized procedures. You have chapter altogether, due diligence and investigation, but you don't have any standardized procedure. Next is reasonable assurance. Reasonable assurance is given by auditor. And for conducting audit, you have standards on auditing. Last is limited assurance. Limited assurance is given by reviewer. The standards which you follow are known as standards on review engagement, SRE. This can be tested as one of your MCQ question. Next, projected financial statement. Projected financial statement के लिए you follow SAE. ये वही SAE है जिसके हिसाब से आपको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 पार्ट 1 शेड्यूल 2. ठीक है, okay. This is SAE wherein you express your opinion on the future forecasted financial statement, provided that you are not vouching for the accuracy of the same. Provided you are not vouching for the accuracy of the same, because if at all you vouch for the accuracy of the same, it will be a professional misconduct. Last is agreed upon services. Agreed upon services are related services. So the standards which you follow are standards on related services. SRS. That SAs, SRE, SAE, SRS. And Devo ke Dev Mahadev, SQC1. Any kind of engagement. Now SQC1, pay attention. SQC1 is applicable on the firm. The firm is engaged in any kind of engagement. फर्म कुछ भी करने दो, ऑडिट करने दो, इन्वेस्टिगेशन करने दो, रिव्यू कर, कुछ भी चीज करने दो फर्म को, फर्म जो भी काम कर रहा है फर्म पे एप्लीकेबल होगा SQC. What is this? Quality control standard. And the similar standard you will find it in SA 220. ठीक है, SA 220. SA 200. SA 200 में easy points. Yeah. SA 200 में SA 200 talks about repeat, recapitulate, बोल करके पढ़ना. क्या बोलता है? SA 200 talks about overall objective of an independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. जो भी चीज रेड से मार्क की है वो तीनों की तीनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू express reasonable assurance on historical financial statement that the financial statements are free from risk of material misstatement either due to fraud or due to error. What is secondary responsibility? Secondary responsibility is to prevent fraud. So who has the primary responsibility with regards to fraud? Management. Primary responsibility regarding the prevention of fraud is of management. And how will you be able to express your opinion? You will be able to express your opinion by obtaining sufficient and appropriate audit evidence, where sufficiency denotes quantity, appropriateness denotes quality. ठीक है, इसके बाद the auditor should exercise professional judgment, that is exercising of the experience, and also exercising professional skepticism. What is skepticism? 3 important words. Skepticism means being alert, possessing questioning mind, and critical assessment of evidences obtained. Repeat. What is professional skepticism? MCQ question. What is professional skepticism? Being alert, possessing questioning mind, and critical assessment of evidences obtained. ठीक है, this is how you should try doing your audit, exercising professional judgment and exercising professional skepticism. Other than this, you should conduct your audit in an ethical manner. What is ethical manner? Ethical manner का मतलब होता है you have to comply with ethical requirements. Ethical requirements are COPI,
सेम विल ऑल्सो बी रिपीटेड अंडर प्रोफेशनल एथिक्स. वहां पे रिपीट नहीं करेंगे, अभी पढ़ लो. एथिकल रिक्वायरमेंट्स 5 है. कौन सी? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी. ठीक है, रिपीट. कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी. क्वेश्चन क्या है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स. इसके बाद इंडिपेंडेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है whenever an auditor is conducting audit, he is independent in mind as well as in appearance. What is independence in mind as well as in appearance? In mind का मतलब होता है no third party. वर्ड्स पे ध्यान दो. No third party is able to influence or control your decision. No third party is able to influence or control your decisions. What is independence in appearance? What is appearance? Appearance का मतलब होता है no third party should understand that the auditor has compromised the integrity and the objectivity. थर्ड पार्टी को देखते से आपके बिहेवियर से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार पार्शलिटी कर रहे हैं यार, ये तो फेवरिज्म हो रहा है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो देयर आर टू वर्ड्स. इंडिपेंडेंट कैसे? इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज इन अपीयरेंस. Next, how to conduct this audit? You need to conduct this audit as per standards on auditing. Absolutely, मैंने अभी बता. Next, opinion. अब opinion is where you say, owing to inherent limitation, auditor always expresses reasonable assurance. Repeat. Owing to inherent limitation, auditor always expresses reasonable assurance. Now, what are inherent limitations? What are inherent limitations? There are 4 inherent limitations altogether. It is NATO. NATO. What is NATO? N stands for nature of financial reporting. A stands for audit procedures. T stands for time and cost. O stands for other search reasons. Nature, audit procedures, time and cost, others. समझ में आता है? अदर्स में क्या क्या चीजें आ सकती है? अदर्स में चीजें आ सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, collusion between the management, going concern, uncertainties. ये सारा चीज अदर्स में आ सकता है. So because of this NATO as a reason, auditor always expresses reasonable assurance and never he is able to, nor he is expected to express absolute assurance. समझा? पक्का? Next is ये वाला क्वेश्चन देख लो. See, whenever you talk about limitations for audit and limitations for certificates are almost same. So ये question मैंने add करके यहाँ पे रख दिया है कि some of the limitation associated with special reports or certification, आंसर में almost यही inherent limitations को लिखूँ. ठीक है? So limitations with regards to audit report या limitations with respect to any specific report or certificate are the same. It is NATO. What it is? It is NATO. NATO का मतलब क्या है? Nature of financial reporting. A is auditing procedures. T is time and cost. O is any other. Make sense? पक्का? या इसके बाद एक कंसेप्ट आता है ऑडिट रिस्क. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट रिस्क? आगे आने वाला है ये कंसेप्ट. ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन. रिपीट. Audit risk is a risk of expressing inappropriate audit opinion. This is because of two components. Which are they? Assessment of risk of material misstatement and managing detection risk. So audit risk is based on two things. Yes. Audit risk is based on two things. Which two? Risk of material misstatement and detection risk. What is risk of material misstatement? Risk of material misstatement has two very components: inherent risk and control risk. What is inherent risk? Inherent risk is because of the due nature of the entity. Inherent risk is the risk, the susceptibility of the assertion. Assertion about what? About class of transaction, account balances and disclosures to be misstated. That can be material, either individually or in aggregate with other misstatement before consideration of controls. मतलब assertion का गलत होना and वो गलती material हो सकती है individually या फिर in aggregate. That गलती is known as inherent risk. ठीक है? अब inherent risk तो है ही. अब ये रिस्क को कम करने के लिए organization will implement controls.
Organization will implement controls. This control will try suppressing this inherent risk. But yes, suppressing will make this inherent risk zero. Kya controls can make inherent risk zero? Answer is no. Even after controls being in place, there still exists some sort of risk. That risk is known as control risk. Hence, words पे ध्यान दो. Inherent risk is before applying controls, and controls is this control apply करने के बाद जो risk बच जाता है. Risk after applying controls. समझा? पक्का? Next. What is detection risk? Detection risk is the risk that the procedures performed by the auditor will not be able to detect the misstatement. Not detect a misstatement. Okay? So this is the risk after applying audit procedures. The risk of non-detection. Hence, audit risk is equals to, ऐसा लिखना है, AR is equals to RMM into detection risk. फिर RMM को और break करने का. RMM is equals to IR into CR, that is inherent risk into control risk. Hence, AR is equals to IR into CR into DR. ठीक है, इस पे May 19 पे वो कैलकुलेशन वाला सम आया था. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट. मैंने क्लास में भी ये सम करवाया था. द आंसर ऑफ ऑडिट रिस्क वाज 4%. ठीक है. नेक्स्ट, the auditor assesses a risk of material misstatement and manages detection risk in order to reduce the audit risk to an acceptable lower level. Done? Audit risk clear है? ऐसे 200 यहाँ पे खत्म होता है. Next, ऐसे 210. Essay 210. What is essay 210? 210 talks about agreeing the terms of audit engagement. Before we accept any kind of engagement, we should be on the same page. So, objective. In order to have a clear understanding between auditor and auditee, ये standard आया है. क्या कहता है ये standard? Preconditions. Preconditions of accepting engagement. First, acceptability of AFRF. Second, management acknowledges their responsibility. Third, unrestricted access all the time for books of accounts, all information, and provide further explanation. Precondition में 3, acceptability of AFRF, management acknowledges responsibility, and third, information and explanation. Next, limitation on scope of audit. What is limitation on scope of audit? If at all management tries restricting your scope before engagement, not to accept that engagement. Before accepting engagement, अगर management is trying to restrict your scope, not to accept it. इसके बाद after acceptance, अगर आपने accept कर लिया है, request management to lift certain restrictions. अगर management फिर भी नहीं माना, if management refuses to make such to remove such restrictions, withdraw from the engagement if law permits, that is if SEBI permits, if law permits, or express disclaimed opinion. Okay. Next, contents of engagement letter. See, appointment letter is given by company to auditor within 15 days under form ADT1. Okay. Now, in response to that appointment letter, auditor gives back engagement letter. इसमें primary content में आता है objective, scope, auditor's responsibility, management's responsibility, AFRF and reporting framework. तो 5 चीजें आती हैं. Objective and scope, उनकी responsibility, मेरी responsibility, मतलब management's responsibility, auditor's responsibility. उनका framework, मेरा framework. AFRF, auditor's report framework. Make sense? इसके बाद other content में you can have elaboration of scope, tentative time, tentative plan, fees structure, confirmation. हम लोग ये भी बोल सकते हैं the audit may involve expert. हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे our audit या फिर our acceptance is subject to the previous year's auditor's confirmation. हम लोग ये बोल सकते हैं कि आज मैं ये confirm तो कर रही हूँ, बट मैंने लेटर भेजा है प्रीवियस ईयर ऑडिटर को. इट इज सब्जेक्ट टू देयर कंफर्मेशन. इफ दे डिसएग्री, इफ दे से कि नहीं हमारा ऑडिट फीस अनपेड है, कुछ आप मत एक्सेप्ट कीजिए, आई विल विथड्रॉ.
तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ सकते हैं. इज सब्जेक्ट टू प्रीवियस ईयर्स कंडीशन, सब्जेक्ट टू प्रीवियस ऑडिटर्स कंफर्मेशन. Next is recurring audit. Do we need to issue engagement letter for every year? Answer is no. If at all it is a recurring audit, only in these 7 cases the auditor can take up the need to reissue engagement letter. ठीक है? So in case of recurring audit, generally the auditor is not required to issue engagement letter. However, in the following 7 circumstances, auditor may decide to reissue engagement letter. सबसे पहला, if at all there is any indication that the entity has misunderstood the objective or scope, उनको समझ में नहीं आया, and remaining 6 are changes. Point number 2, any revised terms, any changes in senior management, any change in ownership, any change in legal or regulatory requirements, a change in financial reporting framework, change in any other reporting requirement. So, in these 7 circumstances, the auditor may take a choice, may reissue engagement letter. Okay? So, what it is? Generally not required. However, in 7 circumstances, yes. Out of 7, 1 is misunderstanding, remaining 6 are changes. Done? This is the most important point which I am going to inform you now. इस पे क्वेश्चन फुल ऑन आने का चांसेस है. इंपॉर्टेंट नोट, अभी इंपॉर्टेंट नोट कहाँ से आया है? When I told you about precondition, what was the first precondition? Acceptability of AFRF. अब समझो, if at all the company का FRF financial reporting framework is unacceptable, मतलब आप उसको accept नहीं कर सकते. But for the fact that it is prescribed under law or regulation, the auditor shall accept the engagement. मतलब क्या है, वो acceptable नहीं है, but law allow कर रहा है, hence हमने भी ऐसा engagement हाथ में ले लिया है. Provided 2 conditions should be fulfilled. 2 conditions है इसकी. Condition number 1, only if 2 condition. First, management agrees to disclose it. Management ने अपने disclosures में इसको लिख करके रखा है. 2, management agrees to allow the auditor to disclose this matter under 706 EOM. Now, can anyone link between EOM? क्योंकि EOM has a clear reference. Now, मेरा EOM कैसा दिखेगा shareholders के लिए? We draw your attention to note number 2, where the management has stated that the financial reporting framework is unacceptable, but for the fact it is allowed by the law, they have prepared the financial statements as per that reporting framework. Yes, याद आया? कल मैंने EOM में ये चीज याद करवाई थी आपको. कल यही अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में हम लोगों ने ये सारा चीज देखा था. यस, चलिए यहाँ पे आपका ऐसे 210 खत्म होता है. नेक्स्ट ऐसे 220. ऐसे 220 and SQC1 are parallel standards. ऐसे 220 SQC1 ऑलमोस्ट बात करता है क्वालिटी कंट्रोल पे, बस सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है. ऐसे 220 is for auditing as an engagement. SQC1 is for the whole firm. अब फर्म चाहे ऑडिट करे, रिव्यू करे, SRS करे या SAE करे, जो भी करे, SQC will be applicable for the firm. ठीक है? Be it you are providing assurance engagement for historical financial statement or prospective financial statement, or you are engaged in any other related services. तो स्टैंडर्ड SQC का नाम पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी. समझता है? Yes? Okay. So what is the difference? I'll just try making you realize this fact. समझो, इंस्टीट्यूट के आंसर्स में ना जहां पे भी क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात आती है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात आई, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात आई, रिटेंशन ऑफ ऑडिट, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल के बारे में बात आई, दे रेफर टू SQC1 ओवर SA220. ठीक है? सो मेक श्योर इफ एट ऑल इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन. ओपन एंडेड क्वेश्चन का क्या मतलब है? दे हैव आस्क्ड यू अबाउट द क्वालिटी कंट्रोल. You are stating SQC1. If at all, that is a close-ended question. What is close-ended question? If at all, they have particularly mentioned the word the engagement is audit. So you try referring to SA220.
चांदनी 705 720 का क्वेश्चन आई टेक एट द एंड, पक्का, ठीक है। अब ऐसे 220 has quality control components in it. सबसे पहला quality control component is leadership. Now, leadership का क्या मतलब होता है? Leadership का मतलब होता है the engagement partner emphasizes the engagement team to follow. Engagement partner should emphasize the engagement team to follow basically compliance of professional standard, legal requirements, compliance of firm's quality control policy, issuance of appropriate audit report, ability to raise the concerns without fear. Quality is essential and indispensable for performance. क्या बात करता है? We being engagement partner, it is our due duty because we are acting as a leader for the team. So it is very much required कि हम उनको बताएं कि quality compromise नहीं होनी चाहिए. इस पे क्वेश्चन आज तक आया नहीं. Next, to ensure the ethical requirements, and ethical requirements are same as before, copy and independence in mind as well as appearance. Next, acceptance and continuous. This is something which is highly expected by me. Maybe it can be like asked in this recent paper, जो तुम्हारा कल paper है, pay attention. Acceptance and continuous, because there is hell lot of chaos in accepting new clients and continuing the same clients after this pandemic situation. ठीक है? अब समझो. Auditor and audit firm, CA firm, shall accept or continue the engagement if he considered the integrity of the client. Client का integrity is being judged by us. If any point of time we realize कि यार ये लोग तो एकदम ही झूठे लोग हैं यार, ये लोग गलत ही financials देंगे, छोड़ो मुझे नहीं करना इनका audit. Don't accept it. For the sake of money or for the sake of fees, don't accept the client. ऐसा ऐसे 220 कहता है. He has considered the integrity of the client. The auditor should include the factor as nature of the client's operation, business practices, attitudes, and client principles, key managerial person, owners, and TCW. Second, if he is competent enough, he is capable enough, and he has required resources. मेरे पास time और articles है, only then I'll take any assignment in hand. Next, if he can comply with all the legal and ethical requirements. अगर ऐसा है, only then you should accept or continue any client. Next is human resource. What is human resource? The firm should consider the recruitment processes, performance evaluation, develop the capabilities and competence through training, career development. Why? Because human resource employees, articles are the one who are going to conduct the audit. So in order to maintain the same level of quality, we need to make sure that we are polishing our human resource. कैसे पॉलिश करेंगे? रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख लेंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर लेंगे, हम बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर लेंगे, कैपेबिलिटीज ट्रेनिंग देंगे, फुल ऑन ट्रेनिंग देंगे और करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करेंगे. नेक्स्ट, अब दिस इज अ बिग वन, मतलब ये कंपोनेंट थोड़ा सा बड़ा है. कहता है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. अब बोलता है एक्चुअली एंगेजमेंट परफॉर्म करते समय आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है. सबसे पहला कंसल्टेशन, दूसरा डायरेक्शन सुपरविजन. आप कंसल्टेशन उन्हीं के पास से लो जहां पे आपको लगता है कि ठीक ठाक कंसल्टेशन मिल जाएगा. डायरेक्शन सुपरविजन. तीसरा डॉक्यूमेंटेशन. अभी ये वर्ड्स पे ध्यान दो. व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि ऑडिटर शुड कीप ऑडिट फाइल, assemble audit file within 60 days of the date of audit report. Repeat, audit file must be assembled within how many days? 60 days counted from the date of audit report. Next, ये जो audit file बन चुकी है, the auditor must retain the file for next 7 years. Retention of the file for next 7 years counted from, words पे ध्यान दो, counted from the date of audit report or group audit report, whichever is later. मतलब क्या? आज तुम्हारा सब्सिडरी का रिपोर्ट आया है, अराउंड 5 दिन बाद तुम्हारा ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट आया है.
तो ये सब्सिडरी का ऑडिट फाइल जो आपने असेंबल किया, इसको कौन सी डेट से 7 साल तक मैनेज करोगे, यहां से या यहां से? आंसर इज यहां से, विच एवर इज लेटर. ठीक है, सो यू नीड टू सी 7 years रिटेंशन इज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर. एमसीक्यू क्वेश्चन है पीपल, आपके सैंपल सेट में इसका क्वेश्चन आया हुआ है. नेक्स्ट, search documentation are the property of the auditor. The firm is having the own property. He may at his own discretion make parts or extract and make it available to the client, provided such disclosures should not undermine the validity of work performed. सिर्फ वो डिस्क्लोजर से आपके काम को आपके काम को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए यू आर ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी और एनी ऑफ द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल. समझा है? पक्का? सो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, assembly of audit file 60 days, retention 7 years from the date of audit report or group audit report, whichever is later. Third, documentation are the property of auditor. He may at his own discretion make parts or extracts and make it available to third party. Next, engagement quality control review. ये RTP में आ चुका है, हाई चांस आपके पेपर में रिपीट हो जाए. ठीक है? What is engagement quality control review? It is a process designed to provide an objective evaluation before issuance of report. ठीक है? सो रिपोर्ट इश्यू करने से पहले आपका रिपोर्ट कोई पर्सन रिव्यू कर लेगा फ्रॉम द सेम फर्म. अगर आपने कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया है, इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट EQCR, मैंडेटरी फॉर ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, डिस्क्रिशनरी फॉर अदर एंगेजमेंट. ठीक है? इन केस the reviewing partner and engagement partner are not mutually agreeing, the report should not be issued until and unless the difference is solved. Difference in opinion, the firm should not issue the report until and unless the difference of opinion is solved. ठीक है? Independence assessment should also be given to the reviewer. ठीक है? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपके लिए, लाइक इफ एट ऑल द एंगेजमेंट पार्टनर एंड द साइनिंग पार्टनर आर डिफरेंट, क्या ये चीज चलेगा? आंसर इज वेरी वेल यस. दिस आई वाज मेकिंग यू ऑल अंडरस्टैंड यस्टरडे. कल वाले सेशन में इसके बारे में बात की थी. 145 के तहत, साइनिंग के तहत हम कहते हैं जो ऑडिटर ऑडिट करता है वो साइन करता है, मतलब जो एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट कर रहा है वो साइन करेगा. इफ एट ऑल बाय एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट ही एक्सपायर्स, ही डाइज, वो गुजर गए, तो कैन anyone else sign the audit report? Answer is yes, provided the other partner exercises reasonable due diligence. ठीक है? This is also RTP November 19 का क्वेश्चन. ठीक है? ये था ली, हेम और एम से मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग में आता है obtain reasonable assurance कि हमारी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी कंट्रोल आर अप्रोप्रिएटली एडिक्वेट एंड दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. Obtain reasonable assurance that the firm's policies, procedures relating to quality control are relevant, adequate, and are operating effectively. Done? पक्का? मैम ऐसा हो सकता है ना, फर्म का एक पार्टनर ऑडिट करे और दूसरा साइन करे, सो दैट 141(3)G का कंप्लायंस ना हो. दीपक, यस ऐसा हो सकता है, प्रोवाइडेड जो साइन पार्टनर है ना, ही इज एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस. मैम using keywords in exam will be enough to score. एक मिनट, you need not write the keywords in the paper. कॉपी कहा, लिया, ये सिर्फ आपके बाय हार्टिंग पर्सपेक्टिव है. You need not write it in your paper. ठीक है? It is just to click that first word and you keep on writing the answer. यहाँ पे आपका ऐसे 220 भी खत्म होता है. Going ahead with 230.
230 audit documentation is a record of three things. It is a record of PEC, procedures, evidences, and conclusion. Repeat. Audit documentation is a record of audit procedures, audit evidences, and conclusions. Rupika, yes, we'll try doing so. Next is benefits of audit documentation. What is benefits of audit documentation? Benefits में you have two things internally to understand. One is internal benefits, other is external benefits. ऐसा कोई heading bifurcate करके नहीं दिया है. It is just me for the sake of simplicity of by-hearting. I have classified this in this manner. Internal benefits में अगर मैं documentation कर रही हूँ तो मुझे क्या फायदा? I'll be able to make a plan and to perform on it. I will be able to direct and supervise because the things are written. I will be able to hold accountability. ठीक है, तो 3 इंटरनल: प्लान, डायरेक्ट सुपरवाइज, अकाउंटेबिलिटी. एक्सटर्नल में डॉक्यूमेंटेशन विल हेल्प क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अभी EQCR पढ़ करके आए हम लोग. Documentation will help external inspection. Even in peer review, the peer reviewer is going to check your documentation. So documentation will help in external review, external inspection. Next. Points to be remembered. Audit working papers are the property of auditor. He can make his blah blah. अभी मैंने पढ़ा. Preserve up to 7 years. ये यहाँ पे वो date आ जाना चाहिए from the date of audit file, from the date of audit report or group audit report, whichever is later. Audit file should be assembled within 60 days. हाँ, ये चीज ध्यान रखो. देखो. Yes. EQCR में working papers भी assess होता है. फ्रांसिस का yes, very well yes. Next, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो. See people, if at all auditor के बारे में बात करें, once the documentations are like, can you delete, discard any evidences which you have collected during the course of audit? The answer is straight. Forward no. Any document from the audit file which you have. तो मैम अगर हमको ऐसा करना है तो क्या करेंगे? See, it is only because of one due reason. अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कि आपने एक एविडेंस को डबल फाइल कर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी हो रहा है. तो अगर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस यू वांट टू डिलीट और डिस्कार्ड एनी ऑफ द पेपर फ्रॉम द ऑडिट फाइल, यू नीड टू वेरी वेल एक्सप्लेन द रीजन फॉर सच मॉडिफिकेशन. Only after that modification chalega. But he can modify, explain the reason for such modifications and when and by whom were they made or reviewed. Okay? So apparently straightforward no. But if at all that is for administrative reason and the reasons for which are explained in writing, only then you need to you can delete or discard any working paper. Explain and किसको कर and नहीं, you need to mention this in your audit file only. किसी को भी अभी apparently नहीं करना. You need to keep it recorded. Done? Next is the important question: form and content of audit documentation. Form and content of audit documentation. Audit documentation, it is different size and complexity of company, entity, audit procedures which you follow, risk of material misstatement, evidences which are obtained by you, extent of exceptions identified, मतलब कितना गलती मिल रहा है उसके बेसिस पे audit documentation कम या ज्यादा हो. Need to document a conclusions, कहाँ पे कोई law के तहत कोई need है क्या. And last is methodology and tool. इसका की कोड है बेसिकली SA रीत. S stands for SA एक रीत है. That is the key code of this answer. Form and content of audit documentation. कि documentation कितना कम या ज्यादा होगा. It depends upon the size and complexity.
It depends upon audit procedures. It depends upon risks. It depends upon evidences. It depends upon extent of exception. It depends upon tools. And ये एक additional points है जो आप ऐसे याद रख लो, need. समझा? पक्का? So form and content of audit documentation depends upon SA REIT. SA REIT. Done? Yes, even MTP has this question which I made the paper, उसमें ये question add किया हुआ है. Francisca, yes. अब next thing, audit documentation मैं किस हिसाब से बनाऊं? This is a probable MCQ question again. ठीक है? Auditor should prepare audit documentation कुछ इस हिसाब से बनाओ that it is sufficient for an experienced auditor to understand fact, procedures, evidences and conclusions. ठीक है? कुछ इस हिसाब से audit documentation बनाओ that it is enough for any experienced auditor. Words पे ध्यान दो. Experienced auditor to understand what procedures you have followed, what evidences you have obtained, and what conclusions you are drawing. Done? Yes? यहाँ पे आपका essay 230 खत्म होता है, starting with essay 240. People, please maintain the same pace. ठीक है? ये same pace से आप आपकी बुक से रिवाइज करते जाइएगा. Don't be very slow. ठीक है? You know everything. Please be confident. आपको सभी कुछ आता है. ठीक है? Next is अरे 420 नहीं 240. That is fraud. ठीक है? Auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. अब relating to fraud इसमें objective क्या है? 3 objective है. Identifying and assessing risk of material misstatement due to fraud. To obtain evidences, basically मुझे सबूत चाहिए. To assess the risk due to fraud, and lastly to respond that fraud event appropriately. ठीक है? First क्या है? Identify. Second, जो identify हुआ उसके लिए evidences इकट्ठा करना. और तीसरा, जो fraud मिला है उसको appropriately respond करना. Next, what is the meaning of the word fraud? Fraud is that intentional activity done by one or more individuals in an organization. It involves management TCWG in an organization with an intention to obtain words unjust or illegal advantage. Unjust or illegal advantage. Rupika, yes. NBFC and corporate governance के full lectures है. Next is fraud risk factors. अब ये समझो. What do we mean by the word fraud risk factors? These are the factors which are responsible for fraud. These are the factors which are responsible for fraud. अब ये fraud risk factors में 4 चीजें आती है. Incentive, pressure, opportunity, attitudes या rationalisms. क्या 4 चीज आती है? It is an event or condition that indicates possible incentive, pressure, opportunity, attitudes या rationalism. कोई लोग ही ऐसे होते हैं नहीं मैम इसमें क्या fraud, पापी पेट के लिए करना पड़ता है. That is attitudes or rationalisms to commit fraud. अगर ऐसा factors आपको दिखाई दे रहा है ना, you need to be very much precise कि यार this is a possible indicator of fraud. ठीक है? अब next, what are the types of fraud? There are 2 types of fraud.
FFR fraudulent financial reporting, or MA misappropriation of asset. What is fraudulent financial reporting? Fraudulent financial reporting is where you try preparing your financial statements with a view to window dress it. आप जानबूझ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विंडो ड्रेस करवाने की कोशिश कर रहे हो. मैनिपुलेशन, misrepresentation, omission, intentional misapplication, fictitious journal entries, assumptions, advancing or delaying in recognizing the entries in the financial statements. So repeat: manipulation, omission, intentional misapplication, fictitious journal entries, assumptions मतलब wrong assumptions, ऐसा नहीं करना है वैसा करना है, wrong assumptions. सिक्स्थ वाला पॉइंट कहता है एडवांसिंग और डिलेइंग इन रिकॉग्नाइजिंग एनी एंट्री और इवेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है. व्हाट आर फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज? फेक एंट्रीज. हम लोग कहते हैं ना एंट्री घुमा दो, दैट इज फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज. ठीक है. जहां पे हम लोग सेल्स को इन्फ्लेट, परचेजेस को इन्फ्लेट, सैलरी को इन्फ्लेट करना चाहते हैं तो वी पास फेक इट. भी नहीं, कंपनी पासेस फेक जर्नल एंट्रीज. नेक्स्ट, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट का मतलब होता है असेट की चोरी करना, जहां पे असेट को आप बिजनेस पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते हो. चार चीजें हैं. फर्स्ट, एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट. सेकंड, स्टीलिंग ऑफ फिजिकल असेट, चोरी करना. थर्ड, कॉजिंग द एंटिटी टू पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज नॉट रिसीव्ड. यूजिंग द एंटिटीज असेट फॉर पर्सनल यूज. जैसे कि कंपनी का पैसा लेकर के अपने कोई भाई बहन को लोन दे दिया, कंपनी की कार को पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया. हम खुद ट्रैवल ट्रिप पे गए हैं, कंपनी को बोला पैसे भर दो. बिजनेस पर्पस नहीं था, बट वी आस्क्ड द कंपनी, वी मेड द एंटिटी पे. You have to be involved in that kind of transaction. This is misappropriation of asset. Next, what are the risk assessment procedures? Basically, directors uses the personal asset to allowed ना for personal expenditure. Directors के लिए perquisites का फंडा ही अलग होता है. That totally depends whether that element is includes as perks. अगर yes, then you don't have anything to do. ठीक है. Next, risk assessment procedures. How will you assess this fraud risk? ये risk assessment procedures कौन सा है risk? Fraud risk है ये. अब बहुत ही अच्छे से be alert, awake, attentive. एक गूगली क्वेश्चन आने वाला है. Attention. Inquiries with management. Management से inquiry करो. Make inquiries regarding management's assessment of risk of material misstatement, management procedures in order to control fraud risk, management's communication with TCWG, management's communication regarding the business practice, ethical behavior, inquiries with internal auditor if any. मतलब management से बातें करो कि भाई आप कैसे फ्रॉड को जस्टिफाई कर रहे हो, आपके पास क्या कंट्रोल्स है, अपने TCWG को क्या चीजें बताई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अटेंशन.